हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे एंड दिस टाइम इन्फोसिस इज गोइंग टू कंडक्ट एन ऑफ कैंपस ड्राइव फॉर द सिस्टम्स इंजीनियर रोल एंड दिस इज ओनली फॉर द बैच ऑफ 2019, 2020 एंड 2021. The CTC which will be offered to the selected candidates is 3.6 LPA. अभी हम लोग बात करेंगे एकेडमिक क्राइटेरिया के बारे में. ओके, इफ यू हैव अ डिग्री इन BE और BTech और ME और MTech, चाहे कोई भी ब्रांच से क्यों ना किया हो. Also, if you are from MCA background or if you have done your MSc from either computer science or electronics or mathematics or physics or statistics, then you are eligible to apply for this job opportunity. Okay. Now, having only a degree is not just enough. You need to have 60% or equivalent in your 10th class. You need to have 60% or equivalent in your 12th class as well. अगर आपने 12 नहीं किया है और डिप्लोमा किया है, then you need to have 65% in diploma. You need to have either 65% or 6 CGPA in BE BTech and ME MTech also. Right? Now, जो भी आपका परसेंटेज या CGPA है, that should be simple average of all subjects, semesters, years, including electives, optional subjects, additional subjects, practical subjects and languages. Okay? अगर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा भी किया है और क्लास 12 भी किया है, then the best of the two will be taken into consideration. Right? जैसे मान लीजिए अगर आपने क्लास 12th में 80% मार्क्स स्कोर किया है लेकिन डिप्लोमा में 84% स्कोर किया है, सो इन दैट केस डिप्लोमाज मार्क्स विल बी कंसिडर्ड, राइट, क्योंकि 84 इज मोर देन 80, राइट. एक्टिव बैकलॉग्स अलाउड नहीं है. कैंडिडेट्स शुड बी विलिंग टू रीलोकेट टू एनी लोकेशन एज रिक्वायर्ड बाय इन्फोसिस. मान लीजिए यू आर कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम योर होम और यू आर कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम कोलकाता लोकेशन, बट इन्फोसिस को बैंगलोर के लोकेशन में आपकी रिक्वायरमेंट है, सो यू शुड बी विलिंग टू रीलोकेट. You should be comfortable to relocate to Bangalore anytime. Okay. Now candidates should be willing to work in different technologies as required by Infosys. आपको किसी एक particular technology आती है, right? And you are comfortable doing work in that particular language or that particular technology. But Infosys का वो requirement time to time change भी हो सकता है. Infosys can expect you to have grasp over any other particular technology जो आप अभी फिलहाल नहीं जानते हो, राइट. बट इन दैट सिचुएशन यू शुड बी एजाइल इनफ टू लर्न दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एज सुन एज पॉसिबल एंड you should be flexible to work in different technologies. Okay, this is all about the academic criteria. Now, most important point, the candidates should not have participated in Infosys Limited and or Infosys group company such as Infosys BPM selection process in the last 6 months. अगर आपने last 6 months किसी भी Infosys group company में apply किया हो या फिर Infosys Limited पे apply किया हो, then you are not eligible for this role right now. Okay? Active backlogs तो बिल्कुल भी allowed नहीं है, right? Now we will talk about the test pattern. In the online test you will have questions from 5 sections. These sections are reasoning ability, technical ability, verbal ability, pseudocode and numerical puzzle. You will get 15 questions from reasoning ability. Similarly, you will get 10, 25 and 4. That is in total 50 questions which you need to solve in 100 minutes, right? You will have 25 minutes to solve the reasoning ability part. You will have 35 minutes to solve the technical ability part. You will have 20 minutes to solve the verbal ability, 10 minutes each for solving the pseudocode and numerical puzzle round. Okay, so this is the whole and soul test pattern, right? Now the most important thing, deadline for applying for this particular role is 17th of December 2021 and this is the link to register for it. Okay, don't worry, I'll give this link in the video's description, so kindly go through the description, link पे click कीजिए and apply for this particular role. So I hope maximum of you watching this video will apply for the system engineer role with Infosys. It is a great organization to work with, right? So आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे.